Hey guys, welcome to Mixed Max. आज हम फिर से करेंगे 7 MCQs a day keeps FMG FOMO away day 26. क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे. Hormonoids include A. Insulin parathyroid hormone, B. Prostaglandins and acetylcholine, C. Glucagon, D. and calcitonin, D. FSH and luteinizing hormone. वीडियो को पॉज करके खुद करिएगा. Hormonoids के बारे में जानेंगे. Hormonoids are tissue hormones. They are produced at the different tissues. They are not produced in glands, and they are active at the local level and travel through blood to can act as organ level, but that mainly act at tissue level. तो इसका आंसर होगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड एसिटाइलकोलिन. द hormones फिर से बोलता हूँ. They are tissue hormones produced at different tissues, not in glands, act at local level. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. Which fixation technique is used for fat in histopathological examination? INICET है. Option A, IHC, immunohistochemistry. B, frozen section. C, liquid paraffin. D, formalin fixed. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, frozen section. Frozen section is used for fixation technique for fat in histopathological examination. Explanation देखते हैं further. Yeah, frozen section technique works for preserving fats, includes three steps: rapid freezing using crystostat machine, two sectioning, and three staining using oil stain. IHC involves use of antibodies to detect specific antigens. Liquid paraffin used in embedding step of routine histopathological processing. Embedding step done to support the tissue during sectioning. Formalin fixed, common method for tissue fixation using formaldehyde based fixatives. तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा फ्रोजन सेक्शन. फ्रोजन सेक्शन इज अ फिक्सेशन टेक्निक यूज्ड फॉर फैट इन हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. ड्यूरिंग द हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रैक्टिकल slide preparation of spleen is kept. The codes of Billroth are found in which part of this part? FMG PYQ ये भी. A mental zone, B trabecular zone, C red pulp, D white pulp. इसका आंसर होगा red pulp. Spleen consist of stroma and parenchyma. Stroma the supportive one and parenchyma the main functional unit. क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं. ये व्हाइट पल्प है हमारा, एंड देयर इज अ जर्मिनल सेंटर इन बिटवीन. व्हाइट पल्प एंड रेड पल्प इज स्कैटर्ड थ्रू आउट. व्हाइट पल्प इज सराउंडेड बाय रेड मैट्रिक्स और पल्प भी बोल सकते हैं. White pulp is made up of aggregates of lymphocytes that surround the central arteriole, constitute the pulse, periarterial lymphatic sheath containing T cells in the center, B cells in the middle, dendritic antigen cells in cells. Red pulp, on the other hand, consists of splenic cord, which consist of the network of reticular fibers with T and B lymphocyte macrophages, splenic sinusoidal capillaries. तो जो रेड बिल रोथ है, हम्म, अपना जो codes of Billroth है, they are found in the red pulp. Other name for red pulp. Question number 3 explanation. और ये germinal center है, it is a site for maturation of the B and T lymphocytes. Question number 4 देखते हैं. All extraocular muscles have been paralyzed. What could be the possible level of lesion? A midbrain, B bones, C upper medulla and D lower medulla. इसका जो हमारी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल इंक्लूड द सुपीरियर रेक्टस ट्रोचलिया वगैरह. इसका आंसर होगा मिड ब्रेन, because all the nuclei of these muscles are located in the mid brain. इसका explanation, further explanation देखते हैं. All nerve nuclei of extraocular muscle are located in the midbrain. Indicates a dysfunction of the oculomotor cranial nerve number 3, trochlear nerve, cranial nerve number 4, and obtusus nerve. The obtusus nerves, they have innervation to the lateral rectus muscle, and trochlear nerve superior. That's not so. Question number 5. Cholelipase is an enzyme found in A. Saliva, B. Bile, C. Pancreatic juice, D. Succus entericus, which is also known as the intestinal juice. So cholelipase is found in the pancreatic juice. इसका कोलिलाइपेज के बारे में जानते हैं. कोलिलाइपेज इज एन एंजाइम फाउंड इन द पैनक्रियाटिक जूस. इट इज अ कोफैक्टर फॉर पैनक्रियाटिक लाइपेज, हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट्स in the small intestine. So cholelipase is a part of the pancreatic juice, which is a cofactor for pancreatic lipase. Question number 6 देखते हैं. A watchman after sleeping overnight with his arm under his head now experiences paresis. Paresis
is different than paralysis. Paralysis is there in which there is motor dysfunction, but there is slight movement. In paralysis, there is loss of movement, but person has in paralysis, the person has movement, shows movement, and there is no numbness in the morning. Which of the following is best explanation for it? A. C fibers are more sensitive to pressure than A fibers. B. A fibers are more sensitive to hypoxia than B fibers. C. A fibers more susceptible to hypoxia than C fibers. D. A fibers are more susceptible to pressure changes than C fibers. तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें एक टेबल देखना होगा। ये वाला टेबल ये बुक से मैंने उठाया है। जो अपने ए फाइबर है, दे आर माइलिनेटेड एंड द कंडक्शन वेलोसिटी इज 100, द मैक्सिमम कंडक्शन वेलोसिटी। ए बीटा, ए गामा एंड ए डेल्टा, तो नीचे दे आर माइलिनेटेड ऑल्सो बट द कंडक्शन वेलोसिटी स्लोज डाउन। जो अपना सी फाइबर्स है, दे आर अनमाइलिनेटेड एंड द कंडक्शन वेलोसिटी इज ऑल्सो वेरी लो। तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर होगा डी। जो अपने ए फाइबर्स, द माइलिनेटेड फाइबर्स आर मोर ससेप्टेबल बिकॉज दे आर माइलिनेटेड, so A fibers are more susceptible to pressure changes than C fibers. C fibers are unmyelinated, conduction velocity very low. Question number 7 देखते हैं. A student fell asleep with one arm under his head. He complains of being unable to move his arm. However, it tingles and pain sensation is still intact. What is the reason of loss of motor function without the loss of pain? There is no loss of pain. There is loss of motor function. So इसका आंसर भी सेम ही होगा. Just A fibers are more sensitive to pressure than C fibers. A fibers myelinated, C fibers unmyelinated. इसका आंसर देखते हैं, ये इसी टेबल से देख सकते हैं। जो अपने C फाइबर्स हैं, they are post ganglionic type of fibers, post ganglionic autonomic skin receptors, और A fibers Gongli tendon organ, Golgi tendon organ, muscle spindles, extrafusal muscle fibers। मेन चीज याद रखनी है, ए फाइबर में माइलिनेशन होती है तो कंडक्शन वेलोसिटी हाई, और सी फाइबर अनमाइलिनेटेड कंडक्शन वेलोसिटी लो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ए फाइबर्स आर मोर ससेप्टेबल टू प्रेशर देन सी फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। थैंक यू।